Great, Javeri, just to mention, R will be leading on the queries, and I'm also there if there is something to that. I think we can start now. We should start. And I should join through the other link, right? जी असद आप ढूंढ लें अपने गो टू वेबिनार का ना लिंक आया होगा आपको गो टू वेबिनार की तरफ से ईमेल आई होगी अक्सर for just knowledge मैंने ये सारी स्पैम में भी चेक कर अच्छा चलेंगे ठीक थैंक यू Yes, this is how I am seeing my screen at the moment. इस तरह आ रही है तो क्या करना है इसके आगे Sharu, आपने लिंक एक्सेस हेलो We have a couple of students in the lobby. We're just starting in a couple of minutes. Please hold on. Thank you for sharing that update, Excel. Thank you so much for joining. The students will be starting with. So when are we going to start? We've started. There's a couple of students also who are waiting for it to begin, so we can start now. We can begin with introductions. Okay, great. So we have how many students right now with us? We have a couple. Okay, great. Thank you. Who can hear us? Okay, great, great. Thank you. Javeri, can you start with your welcome address? We can just go ahead and start. Sure, thank you so much, Aksa, and Assalamu alaikum everyone, and thank you for joining us. We are really sorry for the inconvenience caused
and we're starting a little late because of some technical difficulties. You're all very well aware that we're facing some power shortages in the country, and that is affecting us all as well. But we really appreciate the fact that you are able to join us in Ramadan. First of all, happy Ramadan to you all. And it is absolutely wonderful to connect with the future generation of finance leaders. It is absolutely delightful experience to be talking to you all on this day today, because we just wanted to, have a session with you all, provide a networking opportunity for you to connect with some officials from ACCA Pakistan, education team, business development team, understand if you're facing any concerns, and be able to respond to any queries that you might have. So this session, we wanted to be a very engaging session, because our objective, our ambition with this session is to ensure that you have an adequate amount of support that you need to be able to progress through the ACCA qualification. To basically, in the question and answer session, we'll be discussing with you all if you're taking exams in every session, and if there are any gaps for any particular reasons that you're not able to take exams, you would want to listen to those concerns or reasons why you are not able to take exams, and be able to guide you in in as much detail as possible. So this session is just an engagement session, because we soon want to see you as a member of ACCA, and you're very well aware that ACCA is the world's most forward-thinking professional accountancy body, and you're very well aware that ACCA members, not only in Pakistan but around the globe, are highly valued by employers. We also want to share with you that, during the times of pandemic, ACCA has become so much more concerned about the well-being of its students, and that is why you see we're having this session with you. You see a dedicated support section on ACCA website for your well-being. You might be reading a lot about it on ACCA social media, emails. So basically, we understand that pandemic has disrupted our lives as educators, your lives as students. We were, kind of, you're attending classes, sometimes online, sometimes face-to-face, sometimes hybrid. I know that our approved learning partners, our tutors, you as the students, you've played a huge role in surviving this pandemic through us. So we really appreciate all the efforts that you have been making. However, we do see that some of the students who kind of went on self-study mode have not gone back to approved learning partners, and I would like to take this opportunity to encourage you to kindly revisit your decision, and you'd encourage you that you study with an approved learning partners, because the students, and it's a very known fact that the students who do so, they perform much better in the exams. And you can be absolutely sure and confident of the quality of tuition our approved learning partners offer, because we as ACCA, as the professional accountancy body, are continuously assessing their course delivery. So we highly encourage you and recommend you that if you're self-studying at the moment, we encourage you to join an approved learning partner, any partner that is in close proximity to you, or any partner that might seem suitable to you. So that's one advice that we would want to share with you through this session. Another thing that I would like to definitely mention over here is that I have two colleagues of mine on this session with me, Asad Malik, who's the head of business development for
North. Asad has specifically joined us so he could talk to you about the employability of ACCA students, share with you the scope of ACCA qualification, what might help you in finding employment opportunities if you're facing any challenges in that regard. So if that is a reason that might be, stopping you from taking your exams, Asad would be very, happy to answer your questions in that regard. I also have with me my colleague from education team, Khurram Iqbal. He's the manager education for the South region. He would be very happy to share with you some study resources that ACCA has in place that we really want our students to use, because we assure you that when you use these study resources, which have been developed by experts, which if you use, there's no stopping you from passing the exams, and these resources range from short videos, live quizzes, interactive webinars, maths and English language support, some podcasts. So Khurram will be talking in detail with you about that. So basically, this session is all about helping you, and I'm really glad that you were able to join us today. I would now request my colleague Asad to kick on the session on employability and guide our students with some general information, and then our students will be able to share their concerns. Students, you can share your concerns in the meanwhile as well in the questions, tab that you would see on your screen, and we'd be happy to take your questions towards the end of the session. Meanwhile, if you have any friends of yours who are not aware of this session, please feel free to share this link with them so they could join and take benefit out of this session as well. Thank you for listening to me. I'll pass the session over to Asad now. Just a quick one. Actually, I'm sitting in a different office here in Peshawar. I'm struggling with the internet. I'm just trying to shift to the other connection. So if we can start with my other colleague, and then the next one I can take. Absolutely, not a problem, Khurram. Can you kick off with the study support session? Yeah, Jabiri, can I request Aksa to make me presenter so that I can share my screen? Sure. Aksa, can you give the presenter rights to Khurram? Yes, sure. Just give me 1 second. Yeah. Khurram, you should have those rights now. Okay, Khurram, we're not able to hear you. Not sure if your mic is mute. Yeah, Jabiri, can you see my screen now? I can see your screen and we can hear you as well, loud and clear. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum everyone, and I welcome you in today's webinar, Back to AC Start Journey. So in my brief presentation, हम इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो focus करेंगे, how you can move forward to your ACCA qualification and क्या चीज़ें इस point of time पे आपके लिए important है. As we all know that June 2022 की जो exam entry की deadline है, that is 2nd of May. So I strongly suggest you, before I start my presentation, to book your exam as quickly as possible. Moving on to the presentation. So they can, when you start planning for your exam, there are a couple of things which a student needs to keep in their mind in terms of planning of your studies. And इसमें जब आप exam के लिए appear करते हैं तो दो चीज़ें बहुत important होती है. एक planning of your studies या planning of the exam, and दूसरा जो comprehensive revision का component होता है. So they both go hand in hand, और इन दोनों areas पे focus करना
बहुत ज़रूरी होता है। सो प्लानिंग के लिए यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, पॉडकास्ट अवेलेबल है हमारे पास। इसके अलावा एग्जाम टीम्स की जो है वो गाइडलाइंस अवेलेबल होती हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा, विच इज़ अ not a new tool, but students are not using it up to that mark. And if you are appearing for your strategic professional exam, I'll give you an example. जैसे अगर आप AFM के लिए आप appear कर रहे हैं, so AFM के exam के लिए it is very important कि जो FM का content है, जो आपने पढ़ के पास किया है, वो काफ़ी हद तक fresh होना चाहिए आपके mind में। And if you have passed on a good time from passing FM and appearing in AFM, तो उसकी knowledge को जो है ना वो retain रखना जरा मुश्किल काम होता है। So what ACC has done कि ACC ने आपको bridging courses provide किए हैं for all these strategic professional courses, like SBR के लिए FR का course bridging course available है, AFM के लिए आपके पास FM का course available है, similarly ATX के लिए TX and AAA के लिए AA का course available है, एक bridging course. And how you can access those bridging courses? The access is available through your MyACC account. ये virtual learning center के access हैं जो आप MyACC से आप ले सकते हैं। Small bridging courses हैं। We strongly suggest from ACCA if you are studying paper like, or if you are appearing for paper like SBR, AFM, ATX and AAA, even APM, तो bridging courses को आप जरूर देखें जो आपके MyACC account में BLC के through आप access कर सकते हैं. That will help you to better understand the content of the strategic professional paper, and it will also help you to gain good marks in your June 2022 professional level exam. इसके अलावा मैथ्स एंड इंग्लिश लेवल का जो हमारा सेल्फ चेक मॉड्यूल्स है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है 15 साल के स्टूडेंट जो है वो बुक को तो फॉलो कर रहे होते हैं या जो जहाँ भी वो अप्रूव लर्निंग पार्टनर्स के पास पढ़ रहे होते हैं, बट दे डोंट फॉलो द एक्चुअल सिलेबस। देखिए सिलेबस को भी आपने गो थ्रू जरूर करना है ताकि आपको पता हो कि एज ऑफ टुडे आपने किन किन एरियाज को कवर कर लिया और क्या रहता है। बिकॉज अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने 100% कोर्स सिलेबस को कवर कर लिया, बट इफ लेट्स से 5 या 10% या 2% कंटेंट भी ऐसा है जो आपने अभी तक गो थ्रू नहीं किया, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं है, सो इट्स अ ग्रे एरिया एंड इट कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक एरिया फॉर यू इन द एग्जाम एज वेल, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर एरिया में से सवाल आपके पास आता है सो यू विल स्ट्रगल। सो मेक श्योर यू गो थ्रू द सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली। व्हेन इट कम्स टू रिविजन, देखिए देयर आर डिफरेंट तरीकों से आप रिवीजन कर सकते हैं। एक होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से QBR से रिवीजन शुरू करें। एक होता है आपका जो है वो आप थ्योरी को जो है वो पहले लेके चलें। आई स्ट्रांगली एडवाइस स्टूडेंट कि वो दोनों चीजों को साथ लेके चलें, थ्योरी एंड द QBR. QBR means question based revision, and when it comes to question based revision, right, so ideally आपको CB का जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है जो ACC की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसी पे जो है वो अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें एंड इसमें कोशिश करें जिस हद तक भी आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपके जो भी ट्यूटर्स हैं जहां आप पढ़ रहे हैं उनसे आप रन थ्रू जरूर कराएं, ताकि वो जो शॉर्टफॉल्स हैं, जो गैप्स हैं आपके आंसर स्क्रिप्ट्स हैं, वो आपको एडवाइस कर सके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज द सिटिंग द मॉक एग्जाम। देखिए मॉक एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉक एग्जाम एग्जाम एनवायरनमेंट में एक टाइम कंडीशन में देना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलती है स्टूडेंट्स को। लेट्स से आपने एक कंटेंट की तैयारी की है, एक एग्जाम की, एफएम की, एसबीएल की, एसबीआर की, AA की, पीएम की, किसी भी पेपर की आपने 100% तैयारी कर ली अपने हिसाब से। नाउ यू शुड गो एंड सिट अ मॉक एग्जाम इन अ टाइम्ड एनवायरनमेंट विथ योर ALP। उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो पेपर आपके पास 3 घंटे का आया है वो आप कर पाए हैं कि नहीं, आपकी नॉलेज जो आपने गेन की थी वो कितना वॉमिट कर पाए हैं आंसर स्क्रिप्ट पे। इसके अलावा जो आपके जहन में आपने प्लान करके आप चले होंगे, लेट्स से इफ यू टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्जाम, तो उसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो आपको वहाँ टाइम्ड एनवायरनमेंट में मॉक देते हुए ये भी अंदाजा होगा कि सेक्शन ए में आपने जो एस्टिमेट किया था टाइम, आपने एक्चुअली कितना टाइम स्पेंड किया है। सिमिलरली इट गोज विद सेक्शन बी एंड सेक्शन सी एज वेल। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप टाइम्ड एनवायरनमेंट में जरूर मॉक एग्जाम अपीयर करें, आइडियली 2 और 3, if not 2 or 3, you should appear at least 1 mock exam in a timed environment. टेक्निकल आर्टिकल्स आपने बिल्कुल आपने इसको देखा होगा, आपके ट्यूटर्स ने भी आपसे शेयर किया होगा। सो मेक श्योर कि जो भी पेपर आप दे रहे हैं उसके टेक्निकल आर्टिकल्स आप गो थ्रू करके जाएं।
अनदर इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन जहां ACC आपको सपोर्ट करता है, ACC पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपको सपोर्ट मिलती है, दैट इज द प्रैक्टिस टू पास वेबिनार। हम हर सेशन में कुछ पेपर्स के प्रैक्टिस टू पास वेबिनार्स कराते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होते हैं ये 12 घंटे के। इंशाल्लाह जून एग्जाम्स के लिए भी हम इसको टारगेट कर रहे हैं, विच विल बी यू नो लाइव फ्रॉम मंडे 9th of May इंशाल्लाह अजीज। एंड इसमें जो फर्दर डिटेल्स है वो हमारी ACC पाकिस्तान की वेबसाइट पे स्टडी सपोर्ट के सेक्शन में वी विल मेक अवेलेबल in the somewhere in next week. And another important thing is that कि वही रिसोर्स सेक्शन में जो पास के हमारे वेबिनार्स हमने किए हैं अप्लाइड स्किल्स के तमाम एग्जाम के और स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल के, उनके पास वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग और उनके हैंडआउट्स अवेलेबल हैं। So if you want to make the best use of these resources which are available on our website, please go and access these webinars और इसमें से जितना मैक्सिमम आप बेनिफिट लेना चाहें आप ले सकते हैं, बिकॉज मल्टीपल ट्यूटर्स के सेम पेपर के वेबिनार्स के सेशंस कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन अवेलेबल हैं, जहां उन्होंने QBR रिवीजन भी कराया एंड थ्योरी का रिवीजन भी कराया। सो आई स्ट्रांगली एडवाइस यू कि जो प्रीवियस कंटेंट है उसको भी देखें एंड स्टे ट्यून एंड लुक फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर जून 2022 लाइव वेबिनार्स। ACC CV प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। देखिए अगर आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे कोई स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस नहीं करता है, वो सिंपल वर्ड या एक्सेल पे करता है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट में स्प्रेडशीट या वर्ड का डॉक्यूमेंट आपको आता है उसमें वो तमाम फीचर्स वो नहीं होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हैं। सो उसका लुक एंड फील काफी हद तक सेम है बट उसके फीचर्स थोड़े से लिमिटेड है। सो in order to avoid surprises in an exam in the actual exam, we strongly advise you कि आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे ही जाके जो भी पेपर आप जून में दे रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करें एंड मेक श्योर कि उसके आंसर्स को आप किसी ट्यूटर से भी रन थ्रू जरूर करवाइएगा। ACC सपोर्ट रिसोर्सेज, देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। वर्चुअल लर्निंग सेंटर के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो कि आप माई ACC से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर ACC लर्निंग कम्युनिटी है, यहाँ पे जितने भी एक्टिव ACCA स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट्स के पास ये एक्सेस होता है। आपको कोई क्वेरी है आप या लर्निंग कम्युनिटी के पास भी जाके अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं एंड देयर विल बी लॉट्स ऑफ हेल्प फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब व्हिच विल बी देयर फॉर यू टू हेल्प एंड सपोर्ट विद योर क्वेरी। स्टूडेंट अकाउंटेंट की ऐप, स्टूडेंट अकाउंटेंट आपको पता है जो हमारा मंथली मैगजीन होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है डिफरेंट पेपर्स के लिहाज से अपकमिंग एग्जाम्स के। सो मेक श्योर उसको भी आप ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट स्टडी रिसोर्सेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है ACC पाकिस्तान का, उस पर भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको भी आप ज़रूर जो है वो अपने जो है रिवीजन का पार्ट बनाइएगा। कॉफी विद ट्यूटर सेशन हमने रिसेंटली अभी कॉफी विद ट्यूटर सेशन आई थिंक लास्ट वीक ही किया है, सो उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। अगर वो आप देखना चाहें कि ट्यूटर का डिस्कशन क्या हुआ, अगर आपने लाइव सेशन अटेंड नहीं किया था तो वो भी आप देख सकते हैं। एंड मई के महीने में हम आई थिंक सेकेंड या थर्ड वीक में my colleague Hassan Ashraf will be conducting these read the mind of the marker session for a good number of exam for applied skill and strategic professional papers as well. So please watch out the space on ACC Pakistan Facebook page for more information. इसके अलावा वेलबींग सेशन एंड सपोर्ट रिसोर्सेज की और भी बहुत सारी डिटेल्स है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। हाउ स्टूडेंट कैन मेंटेन देयर वेलबींग एंड आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन, इसकी ट्रेनिंग कोर्सेज एंड मटेरियल हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल। सो यू मे लाइक टू एक्सेस दीज सपोर्ट रिसोर्सेज फॉर बेटर एग्जाम प्रिपरेशन फॉर जून एज वेल एंड बियॉन्ड। सपोर्ट फ्रॉम ALPs, as you know ACCA पाकिस्तान में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तान में पढ़ते हैं एंड वी हैव सपोर्ट मैकेनिज्म के तौर पे अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स अक्रॉस पाकिस्तान in each city. So these approved learning partners provide a lot of study support offers and interventions which can help you to make pass your exam comfortably. इसमें आपकी full tuition है, प्लस कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, मॉक एग्जाम है, प्रैक्टिस सेशंस हैं, ठीक है, कस्टमाइज सपोर्ट है प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स पूरे पाकिस्तान में। अगर कोई स्टूडेंट जैसे मार्जिनली फेल, उसने किया, मार्जिनली फेल की डेफिनेशन ये है कि इफ यू सेट एनी एग्जाम इन लास्ट सेशन बिटवीन एंड यू फेल बिटवीन 45 to 49, so they have tailor made courses available at our ALPs which will help you to support to progress with the ACCA qualification. So please make sure कि आप हमारे अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर से जितना ज़्यादा कनेक्ट हो सकें, that and it is important for you because the support they will provide you in terms of exam preparation, it will help you to pass your exam very easily and comfortably.
these are few names of approved learning partners, but they are not limited. There are many other partners as well. हमारी complete approved learning partners की detail ACCA पाकिस्तान हमारी इस पाकिस्तान की वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे learning provider के सेक्शन में complete information available है. To name few, so we have SCANS, the Banija School of Accountancy, Mirchawala Hub of Accountancy, KNS, and PAC, and so on and so forth. So that's it from my side in terms of presentation. So over to you, Aksa and Javeria. Shahrukh, you can take over from here, please. Shahrukh, can you hear me? Javeria, can you hear Shahrukh? Shahrukh has unmuted his mic. No, not as yet, Waqar, but it is completely all right. Thank you so much, Khurram, for sharing details on study support resources with our participants today. I would request our audience if they have any queries and concerns. We really want this session to be engaging. So keep dropping your questions. Your questions could be related to study support resources. Your questions could be related to any of the general matters that you would want to discuss with ACCA team present on this webinar. I would like to mention once again that I'm Javeria Malik and I'm the Head of Education for North. And you can ask me questions related to education domain. You can ask Khurram questions related to study support and education domain. And we have Asad as well, who would be presenting in a while and talking about ACCA qualification, its scope, employment opportunities, how can you secure a better job, who are the key approved employers. So any general, queries that you may have, you can start dropping those in the questions section that you would see on your screen. So, there is one question, which is from Nadeem Ahmed Khan, who is asking, what is the reason behind failing one paper 3 times with 48 and 49%? Right. Khurram, would you want to take that question? Would you want to answer that question? Thank you very much, Nadeem Sir, for your question. Right. Thank you very much, Javeria. I think to the best of my understanding, if a student is failing between the bracket of 45 to 49, so we feel that कि आपके पास technical knowledge तो है, but there are other areas जहाँ पे शायद आप lack कर रहे हो, and it could be exam technique or some other areas, maybe theory part as well. So इसके लिए जो best चीज है, जो best tool आपके पास available है, that is to sit mock exam as many as you can. और मॉक एग्जाम आप टाइम इन्वायरमेंट में सेट कीजिए किसी भी अप्रूव लर्निंग पार्टनर के पास जो आपको एक्सेसिबल है, जहां आप देना चाहते हैं, ठीक है, एंड 2 से 3 मॉक दें टाइम इन्वायरमेंट में, एंड मेक श्योर येट कि आपको आपके मॉक एग्जाम का फीडबैक मिले, एंड उस फीडबैक में एक चीज आप जरूर उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, इफ नॉट अवेलेबल, कि आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिले. फीडबैक 2 किस्म के होते हैं, जैसे एक सवाल आपने किया 10 मार्क्स का एंड यू गेट 8 आउट ऑफ 10. So this is a numeric figure which is telling you that you get 80% marks out of 100% for that question. But the other thing is that जो 2 marks आपने gain नहीं किए, उसमें आपका tutor आपको input दे कि आपने वो कौन सी चीजें हैं जो miss की हैं अपनी answer script में. So that will help you to better prepare and write your answer in the actual ACCA exam. So my strong advice to you is that appear mock exam in a timed environment, as many as can, and get the constructive feedback from your tutors. Thank you. Thank you so much, Khurram, for your valuable advice to Nadeem Sir. Any further questions, Aksa, we might have? Or we would move to Asad's session now. Let me just see. There's one more question from Mudassir Ashraf. I also gave AA and PM 8 times. Lastly,
score a 49 and 49. Is ACCA giving individual basis weakness to recover? So I think what they're trying to ask is that individual basis, do we offer any help to our students? And also there's one from Sarah Shukpal. So that I'm leaving both of these questions with you. I'm self-studying APM after taking a long break from fundamental exams, so please guide. Do you want me to take this question, both the questions? Yes, please, Khurram, if you may. थैंक यू सो मैं दोनों क्वेश्चंस को क्लब करके आंसर करता हूँ. देखें, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स फेलियर्स है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स यूज किए स्टूडेंट ने. देखिए, एक बहुत आपको इसको थोड़ा सा जो है ना फेस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा कि भाई आपको नेक्स्ट टाइम अगर ये पेपर देने तो आपने कैसे दें, एंड हाउ डिफरेंटली यू वांट टू गिव योर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन. एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, मे बी यू विल नॉट अग्री विद मी. देखिए, अगर आपने 7-8 अटेम्प्ट दे दिए, 5-6 अटेम्प्ट दे दिए, इसका मतलब ये है, इवन अगर 6 अटेम्प्ट आपने दिए, सो अगर आप कंटिन्यूसली भी वन गो में दे रहे हैं विदाउट मिसिंग एनी एग्जाम सेशन, सो दैट मीन्स कि जो कंटेंट आपने पढ़ा है, चाहे वो डबल ए हो या कोई और पेपर का कंटेंट हो, उसको पढ़े हुए आपको 1.5 साल हो गया. और अगर उस 1.5 साल के बाद आपने एक बार भी अगर उसको कॉम्प्रिहेंसिवली रिवीजन नहीं किया है, तो ये एक इशू है, अपने आप में एक इशू है. एट ACCA मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस ये करता हूँ कि अगर आपने कोई कंटेंट एटलीस्ट 6 से 9 महीने पहले पढ़ा है और उसकी आपने 1 या 2 अटेम्प्ट्स दी हैं और आपने पास नहीं किया है, तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि वो दोबारा उस कंटेंट को कोशिश करें, फुल ट्यूशन लें. अगर फुल ट्यूशन नहीं ले सकते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन जरूर करें. सो इन योर केस आप देखें कि आपने क्या कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन या फुल ट्यूशन दोबारा लिया है इतनी अटेम्प्ट्स होने के बाद या नहीं. क्योंकि देखें, नॉलेज को रिटेन रखने का माइंड में एक लेवल है, एक टाइम फ्रेम है. हमने जो चीज आज पढ़ी है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगले 3 साल तक जो कंटेंट आज हमारे पास 100% माइंड में फ्रेश है, वो 3 साल के बाद भी एग्जैक्टली उसी शेप में रहेगा. फेड आउट होती है चीजें, क्योंकि आप नया कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, आपने और बहुत सारे पेपर दिए होंगे. ठीक है, सो माय फर्स्ट एडवाइस टू यू इज दैट कि आप फ्रेश कोर्स की तरफ जाएं, दोबारा इन कोर्स को जीरो से पढ़ें. ठीक है, relearn what you have learned in the past, number 1. And number 2, try to spend as much time as you can for the QBR, question based revision करें और इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम दें. APM के लिए जैसे अक्सर आपने सवाल बताया, सॉरी आई कांट रिकॉल द नेम ऑफ द स्टूडेंट, बट आपके लिए मेरी जो एडवाइस होगी वो 2 चीजें. एक तो ये कि APM का कंटेंट तो आपको रिवाइज करना ही करना है, ठीक है, बट APM के कंटेंट से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप MyACCA में जाएं, स्टूडेंट VLC के थ्रू आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कंटेंट पूरा गो थ्रू करें. जो ब्रिजिंग द गैप का कोर्स वहां अवेलेबल है आपका, आप पहले PM की नॉलेज को रिफ्रेश करें एंड देन फिर APM के कोर्स को आप जो है वो परसू करें, उसको अप्रोच करें, उसको कंप्लीट रिवीजन करें, उसके मॉक दें, क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन दें, एंड देन गो फॉर द ACCA एक्चुअल एग्जाम. सो डोंट गो इन रश. 3 महीने जून में प्लान नहीं कर पा सकते हैं अगर ये सारे काम, कोई मसला नहीं है, गो फॉर सितंबर. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू गो विद द होल हार्टेड ट्राई. हाफ कुक प्रेपरेशन के साथ एग्जाम में ना जाए. ओवर टू यू अक्सा. थैंक यू. Thank you so much, Khurram, for answering those questions. Aksar, do we have any more questions, or we move to our session on employability? No more questions, Tiberia. Great, thank you so much for reading those out to us. Asad, if you're ready, I'd like to introduce you once again. So, dear participants, Asad is the Head of Business Development for the North region. He would be sharing some insights, like I said earlier on the scope and job opportunities for ACCA members, some insights on key approved employers, virtual career fair, which is a flagship event of ACCA, some factors and facts on ACCA's recognition, more information on ACCA Careers Job Board, salary levels of ACCA members. So without further ado, I'll hand it over to Asad. And I would request if you can give presenter rights to Asad as well.
Sure, there is more to talk about because if required, in any case, give me the presenter rights. So if required, I'll be sharing few details. Am I audible? Yes, Asif, you're audible, but a little faint. So if you can just move the speaker or microphone close to your, yeah, that would be better. Is it better now? Much better. Yes, please. Great, great. So give me green signals, Varia, when I can start. You can start, Asif, please. Thank you. Great. Thank you, Javaria. Very warm welcome to all the dear students, affiliates, future members, and members. Uh, Today, I'll be taking you through the employability session. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हम जब भी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं या कोई भी ऑब्जेक्टिव मार्क करते हैं फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बी ऑन द टॉप ऑफ द पीक ऑफ द माउंटेन एवरेज सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम कि आपका पर्पस और वैल्यूज की जो इंटेंसिटी है और इन डेप्थ जो डेफिनेशन है आपके लिए आपके पर्पस की वो भी उतनी ही स्ट्रांग हो आपकी ईगरनेस आपकी क्यूरियोसिटी आपका फोकस so it's at the same time it's very important to understand yeah, in the same way कि जिस तरीके से आप एक ACCA as a professional जब अपने आप को देखते हैं so and after maybe 15 years from here or 5 years or howsoever you see yourself in the next 10 years it's very important to as a professional you should have a very strong purpose and values which are actually there to reinforce who we are, how we do it, and why you as a professional exist in the today's world. So जब आप इसको थोड़ा सा dissect करते हैं और हम थोड़ा सा ACCA जो purpose define करता है for the professional, it says that we are a force for a public good and we lead the global accountancy profession by creating opportunities. So it's very important to understand your purpose. Uh, uh, for example, at the end of the day, we all want to be good human beings. So to be a good human being on this earth, planet Earth, it's very important to have a basic understanding and clarity. So the purpose and values gives you clarity. So have your purpose, framework, and values with yourself, and try to correlate and sync with the purpose of ACCA, which is, once again, I'll repeat, which is that it says that we are a force for a public good. So it's very important to start this today's session with the purpose. So अगर हम इस पर further बात करें, when you know that कि we more of a हम impact की बात करते हैं in terms of a public good. और एज अ प्रोफेशनल हम अपने इम्पैक्ट की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ अ पब्लिक वैल्यू दैट कि आज मेरे जो भी स्किल सेट है इट्स समहाउ एट द एंड ऑफ द डे क्या वो एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशंस को उनकी डिमांड्स को और उनकी नीड्स को कैटर कर रहा है कि नहीं अगर वो उनकी नीड्स को डिमांड्स को और एक्सपेक्टेशंस को कैटर कर रहा है then it means that your purpose is well defined and you have a good clarity with the values which are required in the relevant times of the day. So I'll start with few of the features which are there to help you, and the very important foremost feature ACCA has for our fraternity is the ACCA careers. ACCA careers एक बड़ा कमाल का एक global job portal है which is available for all of you. और अगर आप उस पे जाए तो then you will get to know कि for example you can see that you can find a job for yourself, you can see job alerts, you can also see the list of the approved employers available within ACCA Pakistan and also across the globe, and also there are also roles and industry insights to help you understand कि आज के relevant industry के एतबार से कौन से skill sets in trend है, कौन सी requirements हैं जिन पर आपको focus करना चाहिए,
पर at the same time एक बड़ा ही important tab है जो कि as a more of a as a mentor as a guru आपके लिए काम करता है. You just click on that tab which is by the name of careers advice. So आपके सामने detail में फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के एतबार से आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं एसीसीए की जर्नी के एतबार से सीवी कवर लेटर कैसे बनाते हैं उसके हवाले से गाइडेंस कंप्लीटली मौजूद है. फिर उसके बाद जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिसेंटली इन द पास्ट हम एक बहुत बड़े एक कोविड सिचुएशन से गुजरे हैं और अभी भी टू अ स्मॉलर एक्सटेंट गुजर रहे हैं. तो उस हवाले से बड़े मजेदार किस्म के आपको वहाँ पर मेंटोरशिप मिलेगी, टिप्स मिलेंगी की टिप्स दैट हाउ टू स्टे मोटिवेटेड व्हाइल वर्किंग रिमोटली, यू नो हाउ टू पुट इन इम्पोस्टर सिंड्रोम के हवाले से बात की है, बाउंस बैक फ्रॉम द जॉब रिजेक्शन, 5 facts about empathy at the workplace, you know. So it's a very holistic approach के साथ you will see एक 360 and view में you will see everything there जो भी आप as a future member, student, affiliate, finalist या member के तौर पर आप सोच रहे हैं कि ये these are the current challenges उसके हवाले से you will get see the advice there. Then apart from that, it's also very important to stay in touch with the ACCA business development team throughout the year, 12 years across, 12 months across the year. ACCA की टीम बड़ी प्रोएक्टिव रहती है. We stay on the toes. ये जो approved employer, approved ACCA approved employers हैं हमारे. To name you few, just to build on your confidence कि आप वैसे तो जाकर लिस्ट से भी चेक कर सकते हैं, but for just to name few, for example, we have key employers with us like Pakistan State Oil, PIA, K Electric, PTCL, Pepsi, Coca-Cola, Unilever, Nestle. Talked about the audit firms like PwC, KPMG. In the banking sector, the leading banks like MCB, HPL, you know. And if we talk about telecos, so in the picture we have almost each and every color is there which we believe can add value to your professional journey. So for detailed listing, you can always go on the website and check on the ACCA Careers website the key employers as well. Then the other important aspect is around the एक बड़ा important concept जो है ACCA ने design किया है for the fraternity, and that is called the Career Navigator. So Career Navigator basically is नाम से जाहिर है, it's actually there to navigate you to your professional destination. For example, if you are a member, so it has all the solutions for you as well, tailored solutions. If you are an affiliate, again, it has all the tailored solutions available for you on the Career Navigator. You simply have to go onto the Google website, type there Career Navigator ACCA, and you will be directed to the on the relevant content. So to summarize it, it's actually there to explore the capabilities actually you need for the career you want now and in the future. And again, just a minute, it's all tailored based and development opportunities available. You can explore more than 100 roles for professional accountants, what they involve, the capabilities they require, real life case studies, and find your dream job. So अगर इसके हम key pillars को देखें तो इसमें there is one side to explore. The one important pillar is on the career zone, and then the areas of expertise. So it's a complete it's a complete universe. Career Navigator, go there for yourself and explore. To talk, मैं थोड़ा सा फोकस बात करूंगा क्योंकि ये एक बड़ा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है करियर नेविगेटर का. तो मैं इस पे करियर जोन्स पे थोड़ा सा जरूर बात करना चाहूंगा. फॉर एग्जांपल देयर आर 4 career zones. So first, for example, the career zone 1 talks about the transformation drivers. It talks about all the roles which are actually essential to delivering organizational change,
to long-term sustainable value. यानी कि you will become the part of the solution for any organization. Uh, so it's a very key role in the shape of advisors, educators, uh, entrepreneurs, global business service professionals, technology and data leaders, and then again the role of the CFO itself. So the CFO role, which is actually there, but will continue to expand well beyond its traditional finance, क्योंकि usually हम बड़ा CFO के role को used to के हम उसको बड़ा typical बना देते हैं, but आज के दौर के अंदर CFOs के जो roles हैं वो बहुत extend हो चुके हैं और बहुत inclusive हैं. So this the role of CFO के जरिए you get the opportunity to interact with almost all the functions available around you in your one organization. So ये career zone 1 के एतबार से है. फिर इसमें जो दूसरा career zone है, it talks about, it's very important and also very close to my heart as well, and it talks about the enterprise analyst. The enterprise analyst is someone who actually brings data to life. For example, when we talk about finance business partners, performance managers, analysts, project program accountants, treasury professionals, and also corporate finance experts. So uh, आपका आपका एक्सपोजर पड़ेगा, या आपकी अपने जो खुद से एक लिमिटेड वर्जन foresee किया होता है, just because of the limited homework we have done on the industry, on the content which is available to help you. तो जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमारी जर्नी में शक कर जाता है, या मे बी हम बहुत ज्यादा, चूंकि ऑब्वियसली ये कंप्लीट एक जर्नी है जिसमें आपको एक बड़ा फोकस रखना पड़ता है अपने एग्जाम्स के हवाले से भी. So, but to be successful, to be a successful professional, it's very important कि जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में from first paper से लेकर आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो आप उसको अपनी प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस के साथ बैलेंस करते जाते हैं, and it's very important. अब इसके ऊपर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे. I can take that in the Q&A session. And then there is a very important career zone 3, which is actually, by the name, it's very amazing, and it says that the assurance provider. Now, what assurance provider does? It actually injects integrity into the business by helping to protect and report on value in a variety of roles. मिसाल के तौर पर external auditors, आप हम बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर ऑडिटर्स की, risk managers की, internal auditors की, और especially after the pandemic, ये बहुत roles important हो चुके हैं, and they play a very critical role in providing the confidence to capital markets and assurance to investors and wider stakeholder groups. And then the last one is, by the name it says, the stakeholder reporter. It revolves around the when we talk about the corporate reporters, controllers, which talks about the strong controls and governance over accounting operations, tax experts, investor relations. So there is a lot to explore for you, and without wasting any time, my strong emphasis and advice for you would be कि आप लोग without wasting any time career navigator को in depth detail explore करें, and it has everything you are looking for right now. So by far we have covered the ACCA careers, the ACCA approved employer program. Just to let you know, वैसे तो I think it's a very known fact, but when you are working for any ACCA approved employer, तो आपके जो professional experience requirement के जो PR objectives होते हैं, वो आपके to an extent
एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा इसका एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि ACCA स्पेसिफिकली जितने भी ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं उनकी क्वालिटी एश्योरेंस पे और उनके साथ ओवर द ईयर बड़ा क्लोजली लाइज ऑन रखता है। वी कीप ऑन पुशिंग देयर फंक्शंस के वो अपनी कैपेसिटी डेवलपमेंट करते रहे। ACCA थ्रू प्रोफेशनल इंसाइट्स सेशंस के थ्रू, by taking experts there on their premises or doing virtual sessions, जो है हम उनको ये रियलाइज कराते रहते हैं कि हमारा टैलेंट जो है वो कितना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए impact create कर सकता है. So we as ACCA team are doing our best. We are always there for you, and just take us like your second home, your own family. You know, just like you interact with any close friend or your parents, father, or your elder brother. Take us the same way. A friendly toolkit for you people who are actually always there to support you and to guide you and navigate you at best. So I believe this is it. And if now there are any questions, especially around any challenges you foresee while you study, or any myths you have in your mind, or when to start looking for the internships, or when is the right time, or any questions you have in your mind, please throw all those questions to us. So we will be answering to you right now. Thank you. Thank you very much, Asid, for your valuable insights. I'm sure ACCA would have received some queries. ACCA, please feel free to read the questions out if there are any. No further questions, Javeria, as of right now. Okay, Yeah. so I'd like to request our participants that make great use of this opportunity. And if you might have just general questions which might not be related to the sessions today, you can drop them in the comment section as well. However, if you have questions which are relevant to a session or for a study support session, we'll be happy to take those as well. So we'll give it another 2-3 minutes. Meanwhile, Asid, if you want to share anything further, if there are no further questions, then we can conclude the session and thank our participants. Very valuable update for our fraternity is that there's a virtual career fair just around the corner. You will be getting all the updates about the date and time in your emails. So please keep a good check on your emails, and you will be receiving a proper update from the virtual career fair. और मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि last year through this virtual career fair we had on board with us around almost 139 employers from all across Pakistan, from almost all sectors, from all leading industries, and all leading names were there. So it's a golden opportunity for all of our future members and members to stay in touch and register for this PCF and try to explore the opportunities there. So it has opportunities not only for the beginners, but also for the mid-career levels, and also strategic positions are also offered through this job portal. And through these 139 employers last year, we had with us almost 597 jobs with us available on the last PCF on the day.
एंड मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि it's not something कि जी 597 jobs हैं, but we kept a good trace on those jobs and बहुत सारे हमारे जो future members और members हैं उनको वो jobs मिली भी हैं. So प्लीज आप इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दीजिएगा, और सिर्फ जॉब के एतबार से नहीं, अगर आप समझते हैं कि आप एक जगह पर वेल सेटल्ड हैं और वहां पर जॉब कर रहे हैं और आपको फर्दर अभी फॉर द टाइम बीइंग जॉब की जरूरत नहीं है, इवन देन गो देयर एंड एक्सप्लोर द फॉरम, बिकॉज वहां पर जैसे मैंने ACCA करियर्स के हवाले से बात की कि उसमें एक टैब मौजूद है करियर एडवाइस के नाम से, जिसके अंदर आपको रेज्यूमे, कवर लेटर से लेकर डिफरेंट की टिप्स और मेंटोरिंग वहाँ पर अवेलेबल है. इसी तरह से ऑन द डे हम बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं फॉर द लाइव सेशंस, जूम लाइव सेशंस. लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल वी हैड someone from PwC, Nestle, so such leading names were there. So over to you, back to you, Javeria. Thank you. Thank you so much, Asad. Aksa, if there are no further questions, if you can just share one last confirmation, then you'd thank our audience and conclude the session. Yeah, no further questions. Thank you very much, Aksa, for your help with this. I'd really like to thank Asad for taking out time despite being on business travel to speak to our participants. I'd like to thank Khurram for your support in sharing study support details, study support resources details with our participants. Bakar, thank you so much for the logistic support as well. So to students, I hope that you found this session useful. I'd just like to say one last thing, that any queries, any concerns that you may have that might, be hindering you in any way in attempting exams, and in any way ACCA or our approved learning partners can help you, please feel free to drop a message to us on our customer services email address, as well as you can drop in a message on our social media pages. ACCA has Twitter, Facebook, LinkedIn, and Instagram presence as well. So feel free to drop your queries on any of the social media channels. Our marketing team will be kind enough to share it with us, and we are all here to support you in your progression journey. And like I said in my opening remarks, that we want to see you as members of the world's most forward-thinking professional accountancy body, and if we can support in any way, that would be a pleasure for us. So thank you for being part of this session. We have enjoyed interacting with you, and we look forward to more engagements like this in the future, and to connect with you in the future. Stay safe, have a good Eid, have a good rest of the Ramadan, and we'll connect again. Allah Hafiz.